ओके नमस्कार ओडिशा ओडिया शिक्षा को आपको स्वागत अगेन आउ गोटे वीडियो डिस्कस करबा यूजीसी नेट पेपर 1 नो जतक सिलेबस अछि ता सहित 50 OMR यूनिट 1 नो डिस्कस करबा। फर्स्ट आम जानिछे ए वीडियोटी समस्त को निश्चित भाव में हेल्पफुल हम ओडिशा समस्त यूजीसी नेट एस्पिरेंट मानक पई निश्चित भाव हेल्पफुल हेबो। यूनिट 1 अच्छी टीचिंग एप्टीट्यूड तो आज 50 मार्क्स टीचिंग एप्टीट्यूड 50 OMR प्रैक्टिस करबा। ठीक अच्छे तो सिलेबस वाइज कवरेज स्टार्ट करबा। फर्स्ट चैनल नुआ तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके भूलिबे नहीं। ता सहित नोटिफिकेशन बेल आइकन को निश्चित भाव में ऑल सेट कर देबे जहाँ द्वारा हमर आगामी वीडियो आपन पाखे सर्वप्रथम पहुंची पारिबो। अब स्टार्ट करबा आज वीडियो। फर्स्ट स्टार्ट हो यूजीसी नेट पेपर 1 फर्स्ट यूनिट 1 कवरेज करबा। आज टोटल 50 OMR जो थ्री अच्छी टीचिंग एप्टीट्यूड टोटल 50 OMR। तो स्टार्ट करबा आज फर्स्ट क्वेश्चन टीचिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? Transferring information, B. Giving instruction, C. Facilitating learning, D. Controlling learners। तो UGC नेट देखंतु फर्स्ट मैक्सिमम UGC नेट एस्पिरेंट मानक पई खास कर ओडिया भी हो समस्त पेपर 2 तो मैक्सिमम नंबर आनिबा को चेष्टा करूछन। ता सहित पेपर 1 किछि आनिले से मानन को जेआरएफ क्वालिफाई करबा को हेल्पफुल हेबो। सेति में हमें नै आछे एवरी यूनिट रो 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस। फर्स्ट हमको बुझिबार अछि ऑप्शंस। ठीक है ट्रांसफरिंग इनफॉरमेशन टीचिंग इज नॉट ओनली ट्रांसफरिंग इनफॉरमेशन गोटे टीचर ओनली इनफॉरमेशन ट्रांसफर करिवो नाही। गिविंग इंस्ट्रक्शन नॉट ओनली गिविंग इंस्ट्रक्शन ये सब गोटे गोटे कोन गोटे गोटे पार्ट टीचिंग रो नॉट टीचिंग डिस्क्राइब ही परिबनी। टीचिंग गोटे शब्द रे ये गिविंग इंस्ट्रक्शन बुझी परिबो नहीं। कंट्रोलिंग लर्नर इट टोटली फॉल्स ये ऑप्शन कोनोसी मतरे ही परिबो नाही। तो राइट आंसर हम कौन ना फैसिलिटेटिंग लर्नर। कहीं फैसिलिटेटिंग लर्निंग हम ना मॉडर्न एजुकेशन व्यूज द टीचर नॉट एज ए सेज कौन सी ऋषि हिसाब से देखु नहीं कौन हिसाब से देखे एज ए फैसिलिटेटर है ना फैसिलिटेटर और गाइड ऑन द साइड। ओके बट ए एंड बी ऑप्शन हो कौन ना अल्टीमेट गोल ऑफ टीचिंग टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर लर्निंग बिकम्स पॉसिबल एंड efficient for the student। Next question go jiba the highest level of teaching is what? A memory level, B understanding level, C autonomous level, D reflective level। first हमको ऑप्शन बुझिबार अछि अगेन सेम मेमोरी लेवल हाईएस्ट लेवल टीचिंग कौन पाई मेमोरी लेवल हबनी बहुत इजी। लोएस्ट मेमोरी लेवल माने कौन लोएस्ट लीस्ट थॉटफुल माने फैक्ट ऊपर फोकस करे। ठीक अछि अंडरस्टैंडिंग लेवल कहिले फोकस ऑन रिलेशनशिप एंड मीनिंग्स। ठीक अछि एजुकेशन न फोकस ऑन रिलेशनशिप्स ऑन एंड मीनिंग्स। ओके देन ऑटोनोमस लेवल ये पूरा डिफरेंट। ऑटोनोमस कहले पूरा सेपरेट ये आंसर को बाहर ही कर दियो यार किसी कम ही नहीं। रिफ्लेक्टिव लेवल हो आंसर रोट मेमोराइजेशन सॉरी हमर डी रिफ्लेक्टिव लेवल केमिति बोल रिफ्लेक्टिव ना फास्ट हम बुझिबार अछि टीचिंग इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 लेवल्स। तीनटा लेवल टीचिंग को कैटेगराइज करा जायछि मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल। सेठी कहि हाईएस्ट लेवल ऑटोनोमस लेवल तो नहीं ना ये जो तीनटा स्टेज अच्छी फर्स्ट स्टेज मेमोरी अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव कि रिफ्लेक्टिव लेवल कौन फोकस करे ना हाईएस्ट इटा हाईएस्ट कहीं ना फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग सिचुएशन ने कौन रिफ्लेक्ट करूची जेतो गोटे सिचुएशन आसुची गोटे रियल लाइफ सिचुएशन आसीबो गोटे स्टूडेंट सामने रे से कौन
ना ताको केमती सामना करियो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो क्रिएटिव थिंकिंग हो क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल केमती करूची सेटा हेल्पफुल करी रिफ्लेक्टिव लेवल ओके ओके the next question 3 memory level teaching mainly promotes what option A problem solving B critical thinking C rote memorization D creativity बहुत बढ़िया ओके फर्स्ट हमको बुझिबार अछि मेमोरी लेवल टीचिंग मेनली प्रमोट्स मेमोरी लेवल टीचिंग कथा कहि ठीक है जस्ट टिके पूर्व आम जस्ट बुझुतिले मु कहउतिले जस्ट टिके पूर्व मेमोरी लेवल रोड मेमोराइजेशन को प्रमोट करे जस्ट टिके पूर्व जो मेमोरी लेवल ऊपर आम डिस्कस करतिले काहे कि ना मेमोरी लेवल टीचिंग इज एसोसिएटेड विथ हर्बर्ट कर जानते हो समझते हर्बर्ट स्पेंसर कौन ना मेमोरी लेवल टीचिंग इज द इनिशियल स्टेज वेयर द लर्नर्स ब्रेन एक्ट्स एज ए स्टोरेज जो कौन ना लर्नर फर्स्ट इनिशियल स्टेज प्राथमिक स्तर में निज ब्रेन में सब जिनस स्टोर करे सब डेटा स्टोर करे डेटा कहले ज्ञान ठीक अच्छे ज्ञान स्टोर करे स्टोरेज बिन फॉर फैक्ट्स dates and formulas without necessarily understanding the why behind them माने ये सब जिनस घुसी दिए से घुसी की माइंड स्टोर करे विदाउट जानी की माने न जानी की जे ये सब कौन पे न बुझी की डायरेक्ट कौन करे डायरेक्ट स्टोर कर दी ठीक अच्छे रोड मेमोराइजेशन जोटा कहते घुसा ठीक अच्छे मेमोरी लेवल टीचिंग को बहुत कम प्रश्रय दिया जाए कहीं घुस्सा पट रोड मेमोराइजेशन माने अर्थ माने बुझिबार अछि तुम घुस्सा ठीक अछि घुस्सा घोषणा विद्या कषण जोटा कहती देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 4 नंबर क्वेश्चन रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग एम्फसाइजेस व्हाट रिकॉल एक्सप्लेनेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपीटिशन जस्ट टिके पूर्व में पढुतले प्रॉब्लम सॉल्विंग कहीं ना रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग सब क्या सहित एसोसिएटेड अच्छी हंट को सहित ये कौन करे ना एनकरेज स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस एंड टेस्ट देम इट इज हाईली थॉटफुल एंड ऑटोनोमस रिफ्लेक्टिव लेवल क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना नहीं रिफ्लेक्टिव लेवल एम्फसाइज करे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 teaching is most effective when it is what one way teacher centered interactive content centered question 5 first हमको बुझिबार अछि teaching is most effective when it is what one way माने जते बळे गोटिए पक्ष माने गोटिए पक्ष बुझि पारे आउटे पक्ष बुझि पारे ना टीचर सेंटर टीचर आसीबे जहा कहबे टीचर जहा कहबे ठीक जदि किसी त्रुटि थी से धरा जीवन टीचर सेंटर माने सब टीचर हिसाब से ही हम इंटरैक्टिव हेले इंटरैक्ट हम बोथ स्टूडेंट एंड टीचर इंटरैक्ट हम डिस्कशन हम कंटेंट सेंटर ओनली सिलेबस पाठ पढ़ा जी सिलेबस दिखाई लिमिटेड से पढ़ा कंटेंट बाहर को जाइए पढ़ा जीव ना इंटरैक्टिव हेले किंतु कौन ना धरी नियो आमर एग्जांपल होची गोटे दि जाइए ओडिशार ऐतिह्य एग्जांपल तो ऐतिह्य कहले सिलेबस रे अच्छी धरी नियो केवल कौन कारुकार्य हो जो टेम्पल स्ट्रक्चर हो देछि किंतु आमको खाली टेम्पल स्ट्रक्चर रहिले पिला बुझी पारियो ऐतिह्य कहले गोटे होल माने बहुत बड़ सिलेबस तो आमको किछि एक्स्ट्रा एग्जांपल्स देकी ताको बुझी पार अछि जो से बुझी पारियो इंटरैक्ट करिवो स्टूडेंट टीचर जेतले इंटरैक्ट हबो सेतले कोन प्रॉपर्ली टीचिंग प्रोसेस टा सक्सेसफुल हबो बा इफेक्टिव हो next question number 6 behaviorist theory of learning is based on what insight cognition stimulus response social interaction okay first बुझिया रछि behaviorism theory ठीक अछि behaviorism जानथबो stimulus and response okay तापर ता अंडर कोन थिला operant conditioning classical conditioning Pavlov operant BF Skinner trial and error तो सब जानि थिबो मैक्सिमम समते जानि थिबो ट्रायल एंड एरर किए थंडाइक ईएल थंडाइक ना कौन ओके
स्टिमुल रेस्पॉन्स जो मन थी क्लासिकल कंडीशनिंग रे कुकुर को रखी गोटे केस भितर जो सालिवा स्टिमुलेंट रेस्पॉन्स जीव बाहर कर लाण बाहर करतला जोटे साइंटिस्ट कर किए साइंटिस्ट कर जने असिस्टेंट को देखी से फूड सहित कनेक्टेड हो जाइतला ठीक अछि स्टिमुलेंट रेस्पॉन्स ओके क्वेश्चन नंबर 7 क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वाज प्रोड्यूस्ड बाय हुम जस्ट टिके पूर्व मैं आंसर कहि दिली जस्ट गोटे सेकंड पूर्व पावलोव नहीं जस्ट टिके पूर्व कहि दिली वेरी गुड ओके नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 8 को ठीक अछि ऑपरेंट कंडीशनिंग भी अगेन कहि दिली जस्ट टिके पूर्व क्लासिकल कंडीशनिंग परटा कौन बीएफ स्किनर ओके देन नेक्स्ट ट्रायल एंड एरर एटा भी कहि दी जस्ट टिके पूर्व तथापि कहि देले बेस्ट ठीक अच्छे कौन आंसर जल्दी जल्दी कह दो क्वेश्चन नंबर मार्क करके कह येल थंडाइक नुहे हाँ येल थंडाइक सॉरी येल थंडाइक सॉरी येल थंडाइक हूँ जस्ट मिस्टेक ट्रायल एंड एरर बिले ऊपर मल्टीपल अटेम्प्ट नहीं अटेम्प्ट्स ओके प्रैक्टिस मेथड आओ ट्राई बट डोंट ट्राई ओके क्वेश्चन नंबर 10 रीइंफोर्समेंट इज सेंट्रल टू व्हाट जस्ट टिके पूर्व या ऊपर एक्सप्लेनेशन करूथली रीइंफोर्समेंट सबले पॉजिटिव और नेगेटिव रुहे इज द कोर ऑफ मैकेनिज्म यूज्ड टू इन बिहेवियरिज्म टू स्ट्रेंथन ए डिजायर्ड हैबिट और ए बिहेवियरिज्म अंडर रे ही कोटा रीइंफोर्समेंट जाए कने रीइंफोर्समेंट सब बळे पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ थाए जोटा रिजल्ट थाए ओके तापर कॉग्निटिविज्म क्वेश्चन गुड़ाक यूजीसी नेट पे बहुत हेल्पफुल हम कहीं यही क्वेश्चन को बहुत बुले वाले पकईबार मास्टर हूँ एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कॉग्निटिविज्म एम्फसाइजेस ऑन व्हाट क्वेश्चन नंबर 11 बिहेवियर चेंज नुह बहुत कॉग्निटिविज्म कही ठीक अच्छे कॉग्निटिव माने ज्ञान तात्विक बहुत डीप क्वेश्चन ठीक अच्छे कॉग्निटिविज्म कहले बहुत डीप नॉलेज जोटा कॉग्निटिव माने जोटा सुदृढ़ ज्ञान तात्विक कंडीशनिंग नुह क्लासिकल कंडीशनिंग एरिया जाऊनी कॉग्निटिविज्म तार बिहेवियरिज्म जाउची कंडीशनिंग बिहेवियर चेंज भी जाउची ओके मेंटल प्रोसेस हम करेक्ट आंसर ओके मेंटल प्रोसेस करेक्ट आंसर मेंटल प्रोसेस इज द करेक्ट आंसर ठीक अच्छे कहीं ना अनलाइक बिहेवियरिस्ट कॉग्निटिविस्ट बिलीव द ब्लैक बॉक्स जानथिबो ब्लैक बॉक्स ऑफ द ह्यूमन माइंड मैटर्स दे स्टडी हाउ वी परसीव प्रोसेस स्टोर एंड रिट्राइव इन्फॉर्मेशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय whom ऑस्वेल स्किनर ब्रूनर पियाजेट क्वेश्चन नंबर 12 समझ जानी थिबो जेरोमी ब्रूनर से कौन करते डिस्कवरी लर्निंग ऊपर ना नहीं डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी ऊपर काम करते बाय स्टूडेंट्स इंटरैक्ट विथ देयर एनवायरनमेंट बाय एक्सप्लोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स पर और performing experiments to discover principle for themselves okay Oswell's okay क्वेश्चन 13 को जीवा सॉरी मु भूल कहि देली जस्ट गोटे सेकंड डिस्कवरी लर्निंग ब्रूनर सॉरी एटा मु ब्रूनर जस्ट टिके मिस्टेक रे कहि देली ऑस्वेल कहि देली
नहीं कॉग्निटिविज्म एम्फासाइज ऑन मेंटल प्रोसेस हम ठीक अच्छे 12टा एटा ब्रूनर हम एटा को भूल कही एपट सेपट ब्रूनर हम डिस्कवरी लर्निंग ब्रूनर आनी कहीं जेरेमी ब्रूनर advocated for discovery learning where students interact with their environment by exploring and manipulating objects or performing experiments to discover principles for themselves. Okay, Brunner. Oswell नुहे ठीक अच्छे मीनिंगफुल लर्निंग हम Oswell मुझे पर सब टिके ही गला फर्स्ट हमको बुझीबार अच्छी या भीतर ब्रूनर कर पड़े गला विगोत्स्की नुह सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ना नहीं रजर नुह ये दुटा भी पड़े गला बाकी रहा ऑस्वेल ठीक अच्छे सी कौन कहते डेविड ऑस्वेल्स थ्योरी हिसाब से कौन ना मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग सजेस्ट दैट न्यू इनफॉरमेशन इज बेस्ट लर्नड व्हेन इट कैन बी एंकर्ड टू कॉन्सेप्ट द लर्नर ऑलरेडी नोज जहाँ लर्नर पूर्व जानी कौन करे जहाँ पूर्व जानी आंकर करे मीनिंगफुल लर्निंग ठीक अच्छे 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 एडवांस ऑर्गेनाइजर इज ए कॉन्सेप्ट गिवन बाय whom ऑर्गेनाइजर अगेन ऑस्वेल देले ठीक अच्छे एडवांस ऑर्गेनाइजर इज ए कॉन्सेप्ट गिवन बाय ऑस्वेल नेक्स्ट constructivist theory emphasizes on what इटा बहुत टिके डिफिकल्ट लागे बेले बेले constructivist theory emphasizes on active knowledge construction ठीक है कौन करे ना constructivism points that learner are not passive vessel to be filled. Instead, they actively build their own understanding based on their unique experiences and social interactions. Reinforcement नुह ठीक है क्वेश्चन छोड़ो cognitive development theory was given by whom बहुत इजी जीन पियाजेट ना कौन समस्त जानी थी जोटा कि कौन सेंसरी मोटर स्टेज तापर कौन प्री ऑपरेशनल तर कंक्रीट ऑपरेशनल देन फॉर्मल ऑपरेशनल तर चार्टर स्टेज जीन पियाजेट कर 17 ओके सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज एसोसिएटेड विथ whom जस्ट टिके बरोबर कहितली लेव विगोत्स्की है ना नहीं लेव विगोत्स्की पियाजेट जेतोले कोन कले इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन ऊपर फोकस कले लेव विगोत्स्की जेतोले कोन कले ना एम्फसाइज्ड द सोशल इंटरैक्शन एंड कल्चर आर द प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ कॉग्निशन डेवलपमेंट बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट लेव विगोत्स्की ठीक है 8 नंबर जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बा जेडपीडी रेफर्स टू व्हाट बहुत क्लियरली एटा पोटेंशियल डेवलपमेंट है नहीं जेडपीडी ओके कहीं की न जानी छे हमें जेडपीडी is the sweet spot of learning the gap between what a student can do alone and what they can achieve with the guidance of a more knowledge other जहाँ कहते MKO more knowledgeable other ठीक है MKO scaffolding बहुत easy again 19 क्वेश्चन लेव विगोत्स्की scaffolding माने कौन टिके हेल्प कर दिबा अडल्ट एक्सपेक्ट स्कैफोल्डिंग स्टूडेंट माने कोन एक्सपेक्ट करंती अडल्ट को ठारू टिके हेल्प जस्ट टिके स्कैफोल्ड कर देले माने कर दियंती जने गोटे क्वेश्चन मैथमेटिक्स आसुनी टिके एग्जांपल गोटे देखि आ गोटे एग्जांपल देखि सेई बडिया गोटे क्वेश्चन की तांको को देखै देले से माने कोन करंती हेल्पफुल हो जाय से माने ताको अचीव करंती और सेतर सक्सेस होंती ओके स्कैफोल्डिंग रेफर्स टू द टेम्पररी सपोर्ट hints prompts or simplified steps a teacher provides to a student within their ZPD which is gradually removed as the student gains mastery
Okay. Question 20. Humanistic learning theory focuses on what? Behavior, cognition, self-actualization, conditioning. Question number 20. Self-actualization. Okay. Self-actualization हो कौन पाई ना ह्यूमनिस्टिक थ्योरी मैस्लो और रॉजर्स दी जन सारे कौन ना फोकसेस ऑन द होल पर्सन इट बिलीव्स लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट एम्ड एट रीचिंग वन्स पोटेंशियल कौन बस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वन्स फुल पोटेंशियल और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लर्निंग माने कौन तार फुल पोटेंशियल को पहुंचीबा एटा को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते। Next question. Hierarchy of needs theory was proposed by whom? Maslow. है नहीं Maslow को द्वारा प्रपोज कर बा स्थापन कर बा दिया जाइथिला। Abraham Maslow's hierarchy of needs suggests that basic needs of psychological safety जोटा का मैं कहूँ must be met before a student can focus on higher level learning and growth. बेसिक नीड्स फुलफिल हवा दरकार कौन गोटे हायर लर्निंग को जावा पड़ो। प्रश्न वाइज लर्नर सेंटर टीचिंग इज एडवोकेटेड बाय हुम? ह्यूमनिज्म। ठीक है कहीं ना ह्यूमनिज्म प्लेसेस द लर्नर्स फीलिंग्स इंटरेस्ट एंड गोल्स एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन प्रोसेस कौन ना एडवोकेटिंग फॉर ए नॉन डायरेक्टिव एंड सपोर्टिव टीचिंग स्टाइल। Next question. Question number 23. Experiential learning theory was proposed by whom? बहुत पिला इधर कंफ्यूज हो जाती कोलबर्ग ही करेक्ट आंसर हम कहीं डेविड कोलबर्ग आउ कोलबर्ग बहुत पिला कंफ्यूज हो जाती तो बोधे कोल्ब हम गोटे सेकेंड मत दियो गोटे सेकेंड मुझे टिके कंफर्म कर कोल भी ही हम ओके इट इज डिफरेंट मु कहूँ से कथा मैं सकते हैं कहूँ जो से ही कहते एटा कोलबर्ग नो ऑप्शन भूल टाइप हो जाई छी एटा कोल्ब हबो ठीक अछि एटा ओनली कोल्ब हबो कोलबर्ग हबनी ठीक अछि कोल्ब हला एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी कोलबर्ग ले हम जन मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ठीक अछि नेक्स्ट वन ओके ठीक है 24 नंबर क्वेश्चन लर्निंग बाय डूइंग इज एसोसिएटेड विथ व्हाट लर्निंग बाय डूइंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग है ना नहीं बहुत सिंपल है ना लर्निंग बाय डूइंग इज द हॉलमार्क ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग व्हिच emphasizes emphasizing the true knowledge comes from direct experience and reflection on that experience so practically से सीखे करी कि सीखिबा द्वारा ठीक अछि जोटा से करिवो सेटा से बहुत जल्दी सीखि परिबो एक्सपीरियंस पोजीशन क्वेश्चन टीचिंग एज ए कम्युनिकेशन रिक्वायर्स व्हाट ऑप्शन ए वन वे फ्लो
authority, feedback, content only. Question 25, feedback is the correct answer. Kahinki? Now, in the communication model of teaching, the teacher sends a message, the lesson, the student receives it, and the feedback tells the teacher if the message was understood correctly or not. Okay, question number 26 jiba. Effectiveness is the correct answer. Habo eta kahina two-way communication in teaching ensures. Two-way hele effectiveness, है ना नहीं? Next question को जिबा. Question number 27. Which is not a level of teaching? Memory, understanding, reflective, conditioning. Memory, understanding. Okay. 27. Memory, understanding, and reflective are three recognized levels of teaching. Conditioning is a method or theory of learning, not a level of instruction. ठीक है? ठीक है? Which is not a level of teaching. तीनटा हला कौन आमे जेंती आगुर जस्ट पढ़ते तीनटा स्टेप. Conditioning how? Okay. कौन? Formative evaluation is conducted to what? Rank learners, certify achievement, for what data purpose. ठीक है? Improve teaching learning, promote students. Question number 28. First बुझिबार अछि improve teaching learning how? Formative आमको फर्स्ट जानिबार अछि assessment types of assessment. First entrance exam जोटा हमें कहूचे प्रवेशिका जो entrance level कहूचे हमें सी गोटे assessment जाए. Then formative, diagnostic, summative. ठीक है? Then एबे जिबा question 28 answer improve teaching learning. Why? A formative evaluation like example like quizzes or class discussions. So formative discussion. These happens during the unit to identify gaps and help students improve before the final test. Final test पूर्वरु improve करा जाए formative. यदि किसी भूल लेला जाना पड़ला भूल अछि तो diagnostic करा जाए. Okay, 29. Summative evaluation is conducted when? Okay. Before teaching, during teaching, after instruction, daily. Summative. First, बुझिबार अछि. Summative सबले year end रे हुए किंतु केते बडे ना after instruction दिया जाई तापर जे करे summative evaluation like final exams or end of year projects happens at the end to judge the total learning achieved and assign grades or certifications. Question number 30. Teaching aptitude mainly includes what? Domains and professionalism. Planning, presentation, evaluation. Kahingi? Teaching aptitude is not just knowing the subject. It's the professional ability to plan a lesson, deliver it effectively, and assess the outcomes. Okay. Properly plan how to present and how to evaluate. Question 31. Teaching objectives were classified by whom? Teaching objectives. Okay. Bloom's taxonomy. No. Benjamin Bloom developed the taxonomy of educational objectives, which categorize learning into three domains: cognitive, affective, psychomotor. Bloom's taxonomy ro तीनटा डोमेन अछि है ना cognitive, affective, psychomotor. Question 32. Cognitive domain deals with what? Emotions, skills, knowledge, values. Knowledge, cognitive. ज्ञान तत्व है ना knowledge. Okay. Why? Cognitive domain involves mental skills and the acquisition of knowledge or thinking. ठीक है? Thinking capability, critical thinking. Oh, okay.
Question 33. Affective domain relates to what? Thinking, skills, attitude and values, memories. Question number 33. Attitude and values. Affective, which affects attitude and values. The affective domain involves our emotions, feelings, values and motivating feeling. Okay. Next question. Question number 34. Psychomotor domain relates to what? Just take a barbaro. Explain karutile. Skills. Okay. The psychomotor domain involves physical environment, coordination and use of the motor skill areas by doing. ठीक है? Skills. Psychomotor moment. Psychomotor. Okay. Motor moment. Body motor moment. Okay. Question 35. Highest level of Bloom's cognitive domain is what? Knowledge, comprehension, analysis, evaluation and creation. Okay. Question 35. In Bloom's original taxonomy, 1956, evaluation was the top. In the revised version 2001, creating is the highest level. So evaluation thila, then after creation hela. Seti bhai, kona? Evaluation creation. Okay. Okay. Next question ko jiba. Ta kona Bloom's original taxonomy jiba. Revised version ne change hegi creation he gala, creating he gala. Okay. Question 36. Social interaction model of teaching emphasizes on what? Reinforcement, drill, group learning, D. Memorization. Question number 36. The social interaction model focuses on how students relate to others and the society, making collaborative group work essential. Group learning. Socialization माने memorization आड़ की संपर्क नहीं. ठीक है. Next question 36 वाला. 37. Information processing model focuses on what? Behavior, emotion, cognitive development, personality. Question 37. First time information processing model focuses on cognitive development. But why? This model likens the human mind to a computer. ठीक है. Taking in data, processing it, storing in memory and retrieving it later. Cognitive development process functions what type of information processing model. Information processing model se koiche. Question bujibo. Information processing model focuses on what? Cognitive development. Why? Simple. Kona? It takes data, process it, then store it in memory and retrieve it later when it is needed. So 38. Effective teaching requires what? Authoritarian approach, passive learners, clear objectives, rigid methods. Question 38. Clear objectives. Effective teaching के तरह जो clear आमर objective लक्ष्य कौन आमर clear थी वो. ठीक है. कना manipulate हुआ multiple times. आमर को लक्ष्य विचित हुआ संगर समान. Teaching is effectively only when the teacher and student know exactly what the goal is. Clarity of purpose drives the choice of methods and materials. जब तुम कथा रे क्लैरिटी न थो मुते मो लाइफ रे एया बनिबार अछि सेटा बनिबार अछि ताले तुम कोन आगु बढ़िबो प्रॉपर्ली ए जिनसेट देखला पर मो एटा हेबी पुलिस देबी पुनी आर्मी देखला पर मो आर्मी हेबी तो गोटे गोल रहबा दरकार अचीवमेंट पई क्लियर ऑब्जेक्टिव्स माने टीचिंग इज एन आर्ट बिकॉज़ इट इन्वॉल्व्स व्हाट रूल्स क्रिएटिविटी फॉर्मूला टेक्निक ओके क्वेश्चन नंबर 39 क्रिएटिविटी टीचिंग इज एन आर्ट जोड़ी आसे क्वेश्चन क्रिएटिविटी काम आसे ठीक है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी व्हाई टीचिंग इज एन आर्ट बिकॉज नो टू क्लासरूम्स आर द सेम इट रिक्वायर्स इंट्यूशन इंस्पिरेशन एंड द क्रिएटिव एबिलिटी टू अडॉप्ट द डाइवर्स स्टूडेंट्स नीड्स ओके स्टूडेंट नीड हिसाब रे डाइवर्सिफाई की सब थाए Question 40. Teaching is a science because it is based on what? Intuition, flexibility, systematic principles, emotions. So teaching is a science. Samajhan pedagogy means kona? Method of teaching. Science of teaching.
science of teaching है ना नहीं pedagogy. And the teaching is a science because it is based on what? Intuition, flexibility, systematic principles, emotions. Question number 40. See, systematic principle है ना नहीं कौन भाई ना teaching is a science because it is based on psychological theories, systematic observation and proven pedagogical frameworks. Okay, just take a break mu कहली है ना teaching skills refers to what? Teaching skill refers to what? Content knowledge, specific classroom behaviors, student and performance, curriculum. Question number 41. B. Specific classroom behaviors. क्लास रे तुम केमती बिहेव करछो स्पेसिफिक बिहेवियर और नॉर्मल ह्यूमन रो बिहेवियर अब क्लास रे केमती बिहेव कर सेटा हला टीचिंग स्किल है ना केमती teaching skills are specific identifiable behaviors like explaining, illustrating with examples or using the blackboard that a teacher uses to facilitate learning. Okay, 41 gala. 42 questioning skill is used to what? Controlling students, save time, stimulate thinking, punish learners. Question number 42. While questions can check for silence, the primary educational used to provoke curiosity, activate prior knowledge, and lead students toward deeper thinking. Stimulate thinking. Why it functions? Because it stimulates. Questioning skills is kahinki na jetobale semane jetobale chup hegi shunanti kon kore tamar primary educational use to kon curiosity bhabanti kon hitabo eta kon hitabo tar kon activate prior knowledge तबरे फर्स्ट किछि नॉलेज ता विषय रे हल्का नॉलेज दिबो ताकू खोजिबे जे आर रिलेटेड कोन अछि एंड लीड स्टूडेंट्स टुवर्ड डीपर थिंकिंग डीपली थिंकिंग तबरे नहीं 43 reinforcement increases the what anxiety forgetting probability of response punishment. Question 43 probability of response है नहीं why now in Skinner's theory reinforcement reward makes it much more likely the student will repeat the positive behavior in the future नहीं कहारा पिप स्किनर कोटा ऑपरेंट कंडीशनिंग नहीं जैसे को बिहेवियरिज्म रे reinforcement अच्छी. Okay, question 44 inside learning theory was given by whom? Inside learning Kohler right? Kohler. Wolfgang Kohler's experiments with chimpanzees which name was Sultan right? Sultan नाम को गोटे जो चिंपांजी ऊपर एक्सपेरिमेंट करथिले showed that learning is not always gradual. देखितले कोन learning सबले as usual रुहे नाही. It can happen in a sudden flash of a or insight. Question 45. Gestalt theory emphasizes on what? Gestalt theory. Trial and error, Yale Thorndike, conditioning, classical conditioning, operant conditioning. Question number 45. Correct answer of perception of whole. Gestalt means whole, mane sabu, total all. This theory argues that the whole is different from the sum of its parts. Learners should see the big picture before focusing on details. Okay. ठीक है कंडीशनिंग अंडर रे reinforcement आ जाए reinforcement भी होगा नहीं तो करेक्ट आंसर इज सी. ठीक है करेक्ट आंसर इज सी. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाओ 46 टीचिंग इफेक्टिवनेस mainly depends on what? Infrastructure, syllabus, teacher competence, examination. 46 teacher competence about tick na kon kahingi while gadgets and books help, the most critical factor in a student's success is the
quality, skill and dedication of the teacher. Okay, teacher competence. Okay, next question. 47. Learner autonomy is stressed in what? Behaviorism, cognitivism, humanistic theory, conditioning. Question number 47. Humanistic theory is the correct answer. Learner autonomy is learner ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାଧୀନତା. Humanism promotes self-directed learning where the student takes responsibility for their own education by learner autonomy. Okay. Question number 48. Teaching is a profession because it requires what? Experience only, training and ethics, authority and memorization. The training and ethics are both simple. A profession is defined by specialized training, a body of knowledge and a strict code of ethics, all of which are essential to teaching. Okay. Teaching by सब किसी दिन दरकार कौन ना specialized training, body language or a body of knowledge, a strict code of ethics. किसी ethics रही बात दरकार निजरा नीति नियम रही बात ये सब teaching पे essential है ना नहीं बाध्यकता रही बात. 49. Teaching learning process is what? Static, mechanical, dynamic and continuous, fixed. Question 49 number. Correct answer about dynamic and continuous. ठीक है तो continuous change है. Education never stops and consistently changing and is constantly changing based on new research. Society needs individual students growth. देखो dynamic माने सब बड़े change है परिवर्तित होते हैं. Continuous सब बड़े परिवर्तित होते हैं किंतु continuous चलते कोई stop हुए ना. ठीक है. Question number 50. आज षयबस. A good teacher is one who completes syllabus fast, talks continuously, facilitates learning. Option D, maintains silence. Facilitates learning. Why? Ultimately, the best teacher is one who empowers students to learn for themselves, making themselves unnecessary by the end of the journey. Okay. तो ये वीडियो रहती कि पुणी देखा परवर्ती वीडियो रे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए को भूलिबे नहीं. पुणी देखा आगामी वीडियो रे आ गोटे वीडियो रे यूजीसी नेट पेपर 1 रो यूनिट 2 रे. धन्यवाद. थैंक यू ऑल. धन्यवाद समस्त. जय जवान.